We would be talking about something which we call as a string. What is string? Now, string is a concept which is collection of character. In order to understand string, you should understand first array and then come back to string. Why? In the simplest possible words, in C, we say string is a character array. So I'll give a very quick recap to what I mean by this, and then we'll be going ahead to program and work with this. So be very very careful when you talk about this. Be very very careful when you operate with this. So how things are going to work, how things are going to be operated, जरा ध्यान से. So जब आप बात करते हो string, so let's go on the basics. जैसे मैंने कहा, what is string? String, in a simple words, is a character array. When I say this, it's obviously a question. A string in a simple word is a character array. Means, okay, how you used to create array was something like this. A square bracket, you used to say phi, and voila, your job used to be done. So you used to create an array of 5 elements and then call it simple array of integer. यही कॉन्सेप्ट अगर मैं प्रोग्रामिंग पे लेके आऊँ, so when you plan about programming and how we can operate, it works in a very simple way. You can say char, you can say n square bracket, 10 characters, and voila, you're done, good to go. अब यहाँ पे you created an array, तो you create an array which can at most store 10 characters. So an array with 10 characters. Amar I can store, Panchal I can store, but Amar Panchal combined it is beyond 10. So this will not be able to store. So that's basically the size factor which we talk about. Another interesting thing when it comes to array, when it comes to the system, is very very interesting that we would be working with. In order to get, we'll be taking about scanf percentage s to get string. So if you say n, you'll be able to read words from user. So user can input words, put it df code. So user would be able to read words. Fine. Similarly to print. So we talk about printf, we'll be talking about percentage s. Be very, very careful. Now, there is a slight trick to this also. So when you uh, tend to work, एक option होता है. A lot of people get confused between percentage c, percentage s. Percentage c only works for single character. When you tend to have a single character to work with, that's the thing it is good at. Whereas when you talk about percentage s, talks about string. Complete string can be printed with this. Now, to make it more simple and approachable, let us try to understand few things which you would require to program. So here goes, just a minute, starting with the programming. Just a minute, starting with dev C. Sure. So last time we have already done with arrays. Now we'll be going ahead of this. So be careful. मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ लास्ट टाइम रुका था. So you'll be moving ahead of that particular part. So क्या क्यों कैसे है किस तरह से. So sharing the screen, just a minute. Share. You should be able to see the screen. People able to, just a minute. नहीं हुआ. एक मिनट तो. Okay. People able to see. मेरा screen अटक रहा है. एक मिनट तो. We have just a minute. Okay, let's play with this. So people, let's go with this. So here we are talking about in a very simple manner that this was the usual programming what we did. This is the usual thing which we did for array. What change it would do? So let's first change save as. We are working with one simple thing, string 1 dot c. So we'll go down and make this c, saving it. The concept remains pretty simple. The logic remains pretty simple. ये कैरेक्टर एरे बनाना है अगर है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कैर then square bracket. Now I might give 30 character at most. So this is what we did.
Now you need to read characters. What are we doing, Amar? Simple. Read full name and print it back. Work one simple way. So now, straight away question to ask. Say enter your name. Work one simple way. Scanf, be careful. We'll be talking about percentage s, comma. Here, comma. We'll be talking about NME, which is a variable, which is name of the array. ठीक है. Then, if you want to print it back, so we can say slash n. So your full name is, and followed by percentage s again, comma. You'll be taking name again. One more thing, if you have seen, whenever we were using scanf before this, we used to use ampersand. Now with character string, we don't require. So दे दिया तो error नहीं आएगा, चल जाएगा. Even if you give, you will not get error, but you don't need to. That's what we are trying to say. So remaining things I am deleting. We don't tend to require all this. Saving it again. Let's try to run it up. So when you execute, it will start. Enter your name. So enter your name. I'll say Amar M Pancha. Enter. Now, if you have seen, there is a fun part. Even when I said Amar M Panchal, it stopped by taking. It stopped by taking Amar. अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, अमर चीटिंग है, right? So under that case, what you would do? You'll be using something which you call as getters, followed by name. So Amar, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? You will understand and you will see the difference right now. So as we execute, again I'll see Amar space M space Panchal. Enter. Amar M Panchal. Be very careful when you do this. Whenever you want multiple words, get S is a better option. When you want a single word, percentage S is the option. But while printing, अब ये भी याद रखना, whenever you are taking data using getters, the entire data gets stored in a variable called name. Later on, when I say percentage s num, that num will print the entire detail. So first thing should be clear. Everybody clear till this point? Everybody clear? Able to understand what we are playing with or what we are talking about? Everybody clear? Give me a yes, round of yes, couple of yes, let it come, so that I understand people are getting it. Wonderful. Chalo, good to see. So here we are talking about the core concept that yes, this is gonna be string. String can be created using one way is directly creating an array. That is another way. What if I want to give precise data? मतलब पहले से data दे देना है तो क्या करूँ? Okay. So that calls for something which we call as static. Now, static is something which we have already worked with. Static is something which we already operate with. So chalo, let's try to work it out. तो if Amar, this is first way, right? आप data लोगे और save कर दोगे. Perfect. That's first way. So let's go to string 2. Now in this case, if I already want to store, so if I say char nationality, ज़्यादा हो गया. Nationality, empty bracket, India, and I can put and you are from. Here again you have to specify percentage s to give the data, and I'll be saying word nationality, don't forget, be careful, a is a lowercase. So if I try to run this, check out how things are going to work. So I'll say Amar Pancha. गेट एस यूज किया है तो दोनों वर्ड्स आ जाएंगे. गेट एस तब तक चलता है जब तक आप एंटर हिट ना कर दो. एंटर. सो योर फुल नेम इज अमर पंचाल एंड यू आर फ्रॉम इंडिया. सो यू कैन क्रिएट, बट अमर ये तो आपने एम्प्टी एरे बनाया है. हाँ, बिकॉज मैंने डेटा दे दिया. इसको करने का एक लंबा तरीका भी है. मतलब इफ डोंट नेवर डू दिस, बट अगेन यू शुड नो इज
nation. Consider this way, square bracket equal to, I can give character by character in I. So n, सर इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है? तुमने ऊपर में स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे एक एक कैरेक्टर दे रहे हो, ऊपर स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे एक एक कैरेक्टर दे रहे हो, इंडिया सॉरी. So this is also one of the way. This is also one of the way, not the best way, but people should know that there is a way of working with. There is a way of operating with it. Okay, so you can actually play this way. So we understood two things by now. Number one, how you create a variable called string. There is nothing called as character array. We call it string. Okay, we understood we can create a variable and directly take it from the user. उसमें भी हम लोग को एक बात मिला, मालूम पड़ा कि गेटस से अगर डेटा लोगे तो यू विल गेट अ लाइन ऑफ स्ट्रिंग. टिल द टाइम यू डू नॉट हिट एंटर एवरीथिंग इज टेकन, बट इन स्कैनफ यू कैन ओनली टेक वन वर्ड, यानी कि जैसे ही आपका स्पेस आ गया मेरे दोस्त, तुम्हारा सिस्टम रुक जाएगा. देन वी अंडरस्टूड गिविंग predefined data. You can create empty string. Empty string means भाई यहाँ पे size मत दो, and you just create the overall logic and then directly print it using percentage s. यहाँ तक सब clear हो? Everybody clear till this point? Any doubt, any query, anybody? Everybody clear with this? Any doubt, any query, anyone? Wonderful. So now going ahead, मैंने डेटा दे दिया, मुझे एक एक कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो बिकॉज दिस इज एन एरे, डू नॉट फॉरगेट दैट यू कैन स्टिल हैव अ इंडेक्स बेस्ड एक्सेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स बेस्ड एक्सेस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो इट्स वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड you'll have fun with it. So when you tend to talk about it, how to access single data, chalo, let's go into the third version of our program. So let's say string 3. Now this is interesting for us. सो अमर, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? मैं वापस नाम ही ले रहा हूँ, वापस मैं गेट ऐसे ही यूज करूंगा, बट आई वॉन्ट एवरी कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड विद इंडेक्स. सो व्हाट्स द आइडिया? ओके, मैंने 30 कैरेक्टर्स लिए, बट मेरे पास 30 कैरेक्टर्स नहीं है. सो आई जस्ट यूज int इंडेक्स. सर एरे के साथ इंडेक्स था, वही इंडेक्स है ये भी. तो फॉर इंडेक्स इज 0, index should be less than. Now यहाँ पे be very very careful whenever you are storing. Now ये याद रखना, ये खास याद रखना. So if you're storing a word in string, when you're storing a word in string, consider this way. Maybe you created char num is equal to or num of 30, and then you are going to store just amar in it. Now the most interesting thing which will happen, you'll create an array of 30, 0, 1, 2, 3, 4 up to 29. So 0 से 29, yes, we created array successfully. So sorry. But how I will store this character by character? So I'll be storing A at 0, M at 1, at 2 again A, at 3 again R. And most important to remember, we'll be using something called null symbol. This is called null symbol. Now, how exactly null symbol is going to work? Do not forget how you end your statement in English. You simply put a full stop. Similarly, even if you have given a string of size 30 and you have only given 4 characters, Amar, AMAR, then in that case, operating system, or rather I would say CID, puts this null symbol. What is this null symbol? What is this null symbol, Amar? Null symbol is nothing but a slash followed by 0. What it indicates? It indicates end of string. I repeat, indicate end of string. So it's kind of a full stop. Sir, जरूरत क्या पड़ा? Your string AMAR is a 4 character. You created 30 का स्पेस, तो भैया वो 30 में तो गार्बेज होगा ना, इसके आगे हर जगह पे गार्बेज होगा, गार्बेज होगा, गार्बेज होगा, गार्बेज होगा, up to you go to the end. So what would do, or what would we do? You put down the data and then put a null symbol which is the end of the string. Is this concept clear? Concept wise people are clear? ये clear समझा? Yes, no, waiting.
people waiting. Clear है? चलो. Okay, good to see. Now to go further, now to talk further. अब क्या? So when we go with this, it's a simple phenomena which we are now going to work. Fine. You have given them what index is going to do. You start with index 0. Last is going to be null. How would I know, Amar? Of index. Now this is be very careful. Not equal to single quote slash 0. Amar, what is this? Null symbol. This is null symbol. So you do index plus plus. Okay. So Amar, plan क्या? Simple. We'll be saying printf slash n. We can say at square bracket percentage d. We have percentage d. We have परसेंटेज सी. अमर, अभी तक परसेंटेज एस चल रहा था यार, अब परसेंटेज सी कैसे? मुझे एक एक कैरेक्टर चाहिए. अगर एक कैरेक्टर चाहिए तो परसेंटेज सी, एन कैरेक्टर्स चाहिए परसेंटेज एस. अमर, व्हाट्स द प्लान? विल पुट इंडेक्स एंड विल पुट नेम ऑफ इंडेक्स. ओ सो अमर, ये एरे की तरह एक एक आप एक्सेस करो. एग्जैक्टली, दैट्स द आइडिया. सो इफ आई रन दिस, इट्स गोना बी मोर फन. सो अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा अमर स्पेस पंचल. Okay, what's the idea? You got every data on screen. At 0 A, at 1 M, at 2 A, at 3 R. अमर अमर, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, बीच में ब्लैंक है, ये ब्लैंक है. Because there is no data na, it's Amar space. So you can access every character using index working with this. Okay. So how would you work? You start with the index. Where? How would you stop? Simple. Last में null है, तो जब तक name of index not equal to null, तब तक तुम कंटिन्यू करो. जब तक नल ना आएगा तुम कंटिन्यू करोगे. जैसे नल आया, दैट इज इंडिकेशन दैट योर स्ट्रिंग इज ओवर एंड यू विल स्टॉप. दिस इज हाउ यू विल गो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. आई होप पीपल आर क्लियर. पीपल क्लियर विद द कोर कॉन्सेप्ट? वेटिंग, यस, नो, अगेन, कम ऑन, कम ऑन. Perfect. Wonderful. Sure. So now you understood the core concept, how we work. We understood the core logic, how we operate. आगे क्या करना है, आगे क्या, क्यों और कैसे करना है. So let us try to understand what or how we are planning to work with this. समर, इसका फायदा क्या है? Among the most common program ask find vowels in a given line of string. Vowels A, E, I, O, U. How would you do that? Quite interesting thing. So let's go back. Let's go in string. Ah, my bad. So sorry, मैंने screen नहीं किया. Sorry. Okay, can you repeat? Can you repeat? Okay, we can do that. चलो और एक बार कर देते हैं. Give me a second. So now, as we were talking about in this, I'll put it this way in a very simple words. So when you stored Amar, let me put it in your page. So when your character name had a value Amar, but don't forget it was 30 character. तो मैंने किया क्या? 30 का एरे तो बना 0 1 2 3 4 एंड ये टोटल 30 कैरेक्टर्स थे. क्यों? क्योंकि मैंने नेम बनाते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट में 30 दिया था. बट इसमें डेटा क्या है? ए है, एम है, ए है, आर है. ए यार, ये तो अमर 0 1 2 3 है. सर ये क्या है? ये इंडेक्स है. तो ये सर ये ए एम ए आर क्या है? Value at index. So when I said name of index, ultimately when index was 0, I was targeting a. Index of 1, I was targeting m. Index of 2, I was targeting a. Index of 3, I was targeting. And more important, the last character in this is null, which is end of string, to walk into picture. Now clear? Shuyansh, clear? To Riyansh, sorry, my bad. Clear? Okay. So now, if this is clear, one obvious question we have, अमर vowels ढूंढे तो क्या करोगे? I am very clear about vowels. A, E, I, O, U.
and why not to work with that. चलो उसका बात करते हैं. Let us try to understand what you can do with this and how well we can operate this. So be very very careful to work with. So here goes. Now to get into picture how we are talking about. तो again जो मैं कर रहा था उस पे ही आते हैं, string पे आते हैं. String, let's say vowels. So I'm searching for vowels now. Just for your reference, do not forget vowels are A, E, I, O, U. These are the vowels. तो हमारा आइडिया क्या है? Okay, enter a line. Enter a line. ठीक है. गेट एस से यूज करेंगे. अब नाम चेंज कर देंगे लाइन. अब तुम्हारे जो सी का स्क्रीन है ना फ्रेंड्स, दिस इज ऑफ 80 कैरेक्टर्स, यानी कि 80 कैरेक्टर्स एक लाइन में हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने 80 दिया. तुम 100 दोगे तो रॉन्ग नहीं है. 500 दे दो सर, मेरे पास बहुत है, दे दो, बट फर्क कुछ नहीं पड़ेगा. 80 से ज्यादा वो लेगा नहीं. तो फिर एंटर लाइन. अब आपने लाइन मारा है तो लाइन ले लो. सो यू क्रिएटेड अ लाइन, यू टुक अ लाइन, नाउ यू गो अहेड. अब इंडेक्स है, तुम्हें क्या ढूंढना है? ए ई आई ओ यू अमर. हाउ वुड यू सर्च दैट? सो इट्स वेरी सिंपल. इफ लाइन ऑफ इंडेक्स इक्वल टू ए, और रिपीट करो. इसका शॉर्टकट भी दिखाऊंगा यार, ये बहुत लिखना पड़ रहा है अमर. हाँ, ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू. इसमें से कुछ भी होगा तो मैं क्या करूं? सिंपल, जो भी तुम्हारा काउंट है उसको बढ़ा दो. अमर, व्हाट इज काउंट इनिशियली? वी विल क्रिएट दैट एंड विल कीप इट काउंट एज 0. तो जहां जहां तुम्हारा कैरेक्टर ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक काउंट बढ़ेगा, अमर आइडिया क्या है? एंड में बोलो प्रिंट एफ स्लैश एन लाइन परसेंटेज एस हैड परसेंटेज डी वॉवल्स. अमर परसेंटेज डी क्या आएगा? सी, लाइन के लिए तो मेरे पास लाइन है, वॉवल्स के लिए मेरे पास काउंट है. सो इफ वी वर्क विथ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. रन करते हैं. यहाँ लाइन आना चाहिए, माय बैड. लाइन, सेविंग इट. अब रन करते हैं. तो ये तुम्हारा स्टोरी चालू हो गया. अमर अब लाइन में क्या है? दिस इज अ टेस्ट फॉर यू. एनीबडी कैन टेल मी हाउ मेनी वॉवल्स डू वी हैव इन दिस लाइन? चलो चलो चलो. हाउ मेनी वॉवल्स? ए ई आई ओ यू कितने? ए ई आई ओ यू कितने? ओके, चलो, here goes. तो दिस इज अ टेस्ट लाइन फॉर यू हैड 7 वोल्ट्स. और सर, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, 6 एंड 7, वाई नहीं, ओ यू 7. वी डिड दैट. Everybody clear with the concept how we counted the vowels? Perfect. Good to see. Everybody clear? फंडा समझा कैसे खेला? बहुत सिंपल से प्रोग्राम है. सी इज फन. इट्स फन. प्रॉब्लम इज द वे कॉलेज हैंडल्स. दैट्स नो फन. तो जरा संभाल के. ओके, एवरीबडी क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी? ठीक है. तो यार अमर, ये तो सही है, मतलब डायरेक्ट कंपेयर हो सकता है. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू कंपेयर टू नेम्स? व्हाट इफ आई नीड टू कॉपी टू नेम्स? हाउ वुड यू डू दैट? यहाँ पे स्ट्रिंग लाइब्रेरी आ जाता है. व्हाट इज अ स्ट्रिंग लाइब्रेरी? लेट मी पुट इट जस्ट a bit. So when you say string library, let us try to understand the meaning of it. So we say this statement very carefully. In order to do advanced tasks like comparing string directly, copying two strings, concatenating two strings, we need string.h. I repeat, in order to do advanced tasks like comparing strings directly, copying two strings, concatenating two strings, we need string.h, not admin, string.h. ओके अमर, ये बनाना पड़ेगा. हाँ, मतलब ये है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. सर उसमें क्या है? str len, ये क्या देता है? रिटर्न्स लेंथ
of string. Perfect. Then str cpy, source destination. So sir ये क्या है? Or other, let me put it this way, destination source. सर इसमें destination कौन है? We copy contained of source destination. Then str, ये buildings है सब. str cat cat. Let's call it string 1, string 2. भैया ये संभाल के, ये string 1 में string 1 प्लस string 2 दोनों डाल देगा. ओ मतलब सर कॉपी करेगा. concat attach concat strcmp s1 s2 s1 s या पूरा लिखो तो string 1 string 2 compares to string and returns, जरा संभाल के, 0 if and only if s1, that is string 1, equal to string 2, then a positive number if and only if string 1 minus, or string 1 is greater than string 2. Greater. Similarly, negative if and only if string 1 is less than string 2. तो सर ये काम के, ये चार चीजें बहुत काम आएगी तुम्हें. कंपेयर करना है, यूजर नेम देखना है, पासवर्ड देखना है, तो ये काफी हद तक काम आता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट बिफोर वी कुड गो अहेड, बेसिक थियोरी समझा स्ट्रिंग डॉट एच का? पीपल क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक थियोरी ऑफ इट? कैसे चल रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है? Sorry. Wonderful. Wonderful people. So now we understood. अमर ये तो समझ गया मेरे को कैसे चल रहा है. गुड, ये समझा अमर. अब ये समझा, अब थोड़ा आगे जाओ. अब थोड़ा आगे जाओ. So when you understood this core concept, we would be then talking about the next set of options. क्या अमर ये समझ गया, वोवल समझ गया, हम लोग को ऑपरेशन समझ गया, स्ट्रिंग समझ गया, स्ट्रिंग का यूज क्या? ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स शो यू व्हाट इट इज कैपेबल ऑफ. सो लेट्स से स्ट्रिंग वोवल्स की जगह पे स्ट्रिंग मेथड्स. ओके, अब यहाँ पे मैं जूनियर स्टाइल में अपना काम कर रहा हूँ. सो विल से नेम 1 स्क्वायर ब्रैकेट अमर. आप ऐसे भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो हैव अ लार्जर नेम. लाइक 30 का देके मैंने इतना ही दिया भाई, मेरे पास इतना ही है. ओके, आई कैन हैव केयर 2 30. एज सच इट इज नॉट हैविंग एनीथिंग, इसमें कोई डेटा नहीं है. ठीक है, अब जरा शांति से एक एक काम करते हैं. सबसे पहले let's get a printf and say strlen. क्या करता है? रिटर्न्स लेंथ. सर ये आपने पहले भी बोला. हाँ बट क्या करेगा? परसेंटेज डी देना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो रिटर्न करने वाला है लेंथ, कॉमा. क्या करूँ सर? strlen लिखो फॉलोड बाय num1. अब अमर 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 ये डायरेक्ट चालू होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. यू विल हैव टू से हैश इंक्लूड string dot h. ओ सो string dot h डालना पड़ेगा. हाँ ये एडवांस है ना, वरना नहीं चलेगा. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट str cpy, which does mean copies string 1 to string 2. सर सर उसका मतलब क्या है? करते करते डोंट वरी, स्लैश एन. तो इसमें मैं लिखूंगा str cpy कॉपी. किस में कॉपी करना है? num2 में. क्या कॉपी करना है? num1. सो नाउ वी विल से प्रिंट ले लेते हैं एंड वी विल प्रूव num1
परसेंटेज एस num2 percentage s slash n. Now you'll be saying पहला स्टोरी ओ कंपेयर भी हो रहा है सर. हाँ, कंपेयर करने के लिए strcmp है. सो अगर मैं बात करूं सीधा, इफ strcmp कंपेयर करना है किसको, num1 num2. हमारे दोनों इक्वल ही है ना, अपने ही. हाँ, तो इक्वल इक्वल टू जीरो देंगे, इक्वल इक्वल टू जीरो देंगे. तो क्या करें, तो यू जस्ट से printf slash n both matching. Super. So we are printing. ऐसा नहीं हुआ तो हमारे else पे आओ, both not matching. सही, तो strcmp हो गया और सही है ये सब. तुम्हारे पास डायरेक्ट एबिलिटीज है, बट दिस इज ओनली पॉसिबल प्रोवाइडेड यू हैव string.h. अगर वो नहीं डाला तो तुम्हारा प्रोग्राम भी नहीं चलेगा और फिर तुम लोग रोगे कि सर मेरा प्रोग्राम नहीं चला. जस्ट डिपेंड्स हाउ यू पुट. तो strcmp सर कॉनकैट ठीक है ना, कॉपी हो गया, कंपेयर हो गया, और एक लाइन लेते चलो. तो स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू दोनों है, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेम वन प्रिंट कर रहा हूँ. सर क्यों, यू विल अंडरस्टैंड. सिर्फ नेम वन प्रिंट कर रहे हो, कैसे, क्या, क्यों. क्लीनेस, अरे सो सॉरी, so sorry guys, I'm not having my second monitor, so it becomes difficult. I'll do that, I'm so sorry. I'll do that. So sorry, so sorry. Okay, here goes. So as we are talking about, chalo, let's do it very quick. So in order to have advanced tasks like comparing string, directly copying to string, concatenating two strings, we use string.h. तुम्हारे पास मेथड है string length जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है, string copy जो सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन में कॉपी बनाता है, एक कॉपी दूसरे में, कॉपी कंटेंट ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन. देन स्ट्रिंग कॉनकैट जो पहले और दूसरे स्ट्रिंग को कॉनकैट करके स्ट्रिंग वन में डालता है. और फिर आता है strcpy कंपेयर, ये दोनों को कंपेयर करता है, दोनों इक्वल है तो जीरो देगा. अगर एक पॉजिटिव है तो स्ट्रिंग वन ग्रेटर देन स्ट्रिंग टू होगा तो, एंड नेगेटिव अगर स्ट्रिंग वन छोटा होगा. सो सर एक तरह से सिंपल शब्दों में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये टेक्निकली स्ट्रिंग वन माइनस स्ट्रिंग टू कर रहा है. हाँ, बिगर पिक्चर यू कैन से, बिकॉज अल्टीमेटली तो ही पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो आएगा. ओके, तो अब इसी चीज को मैं समझाने के लिए, आई एम सो सॉरी, सो वी आर डूइंग कोड. तो मैंने कोड में क्या किया है जरा देख लो. मैंने बोला यार स्ट्रिंग डॉट एच चाहिए, इसका सिवा चलेगा नहीं. मैंने नेम वन लिया जिसमें अमर स्टोर किया, नेम टू जिसमें कुछ स्टोर नहीं किया. मैंने पहले स्ट्रिंग लेंथ कॉल किया कि कितना लेंथ है, 4 आएगा आंसर. फिर मैंने स्ट्रिंग टू में स्ट्रिंग वन कॉपी किया, स्ट्रिंग टू में स्ट्रिंग वन कॉपी किया, तो कॉपी हो गया strcpy. फिर मैंने कहा कि स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू ये है. अब फिर मैंने कहा कंपेयर, अगर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो strcmp नाम का एक तुम्हारे पास कमांड है जो दोनों को कंपेयर करता है. एंड फाइनली अगर आपको कॉनकैट करना है, तो आप कुछ इस तरह से वर्क कर सकते हो. वी कैन से concat two strings, and now in num1 सर इससे क्या होगा, नेम वन तो उसमें तो सर नहीं, इसलिए मैं बीच का एक लाइन लिख रहा था strcmp. कंपेयर नहीं है सर, कॉनकैट है, cat. किस में डालना है, नेम वन नेम. तो सर नेम वन और नेम टू का डेटा मिक्स होके इट इज एज गुड एज सेइंग नेम वन प्लस इक्वल टू नेम वन प्लस नेम टू, बट इन स्ट्रिंग मैनर. सर ये चलेगा, दौड़ेगा. लेट्स रन दिस. So if you see, we have different options. String length is 4. String copy string 1 to string 2. हाँ, ये बहुत आड़ा टेढ़ा है, हम लोग को स्लैश एन देना पड़ेगा हर जगह पे जिससे कि हम लोग दिखा पाए. ये गो स्लैश एन, ये गोस डाउन स्लैश एन, बाकी तो सब स्लैश एन है. सेविंग इट. चलो लेट्स ट्राई टू डू दिस अगेन वन मोर. तो सर देखो,
पहले स्ट्रिंग लेन ने 4 कैरेक्टर दिया, 4 हो गया, वेरी गुड। फिर स्ट्रिंग कॉपी ने कॉपी स्ट्रिंग 1 टू स्ट्रिंग 2, तो अब नेम 1 में भी अमर है, नेम 2 में भी अमर है, अमर ही अमर हो गया, अमर ही अमर हो गया, वेरी गुड। फिर बोथ मैचिंग, हाँ, क्यों सर बोथ मैचिंग? स्ट्रिंग 1 को strcmp दिया ना, कॉपी किया, कॉन्कैट टू स्ट्रिंग, एंड नाउ इन नेम, नेम 1 और नेम 2 का सारा डेटा मैंने एक में कॉपी किया, कॉल अमर अमर 2 बार। सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट इट, आई अगेन रिपीट, strlen will give you total number of character including blank space. Similarly, when you talk about copying string from one to another, strcpy, सर डायरेक्ट इक्वल टू नहीं हो सकता, नहीं चलता है, एरर देगा, तो आपको ये मेहनत करना पड़ेगा strcmp में। फॉलोड बाय वी वर्क विद वन सिंपल वे, कॉन्कैट। आपने स्ट्रिंग 1 और 2 का डेटा कंबाइन करके स्ट्रिंग 1 में डाल दिया, एंड योर जॉब इज डन। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस नाउ? पीपल क्लियर? Screen is not shared again. I had shared this. Hmm. अब एटलीस्ट स्क्रीन आया, अब स्क्रीन दिखा सबको, सबको समझा? आई एम सो सॉरी गाइस, बिकॉज प्रोजेक्ट वर्क से आई एम बिट आउट, सो आई कुड नॉट एक्चुअली हैव कैरी माई एंटायर सेटअप, बट स्क्रीन दिखा सबको, कॉन्सेप्ट समझे अच्छे से? ओके,